committee of going into the laws. In fact, all the trade unions were consulted, and then they have formulated these codes, and Parliament has also passed that. But the bills has been circulated to each of the state government, and the state governments are yet to give back. What should be there, what should not be there, what is right for them. As um, Mr. Chaudhary was just mentioning, it comes in the concurrent list. So both the state and the center has the rights for that. So in fact, Karnataka is yet to give back the with their recommendations. Recently, there was a labor law committee that was called by the labor minister and all. So it was very much required in the changing scenario of the industry behavior itself and industry perspective itself, and especially with the emergence of IT industry, ITS, BPO, apart from the manufacturing, mining, coal industries and services. There was once again called as a gig employees, a gig workers that has come, which has huge employment opportunities for the youngsters. Many of them were also having double employment and all this. So government forethought all these things, and then it was very much required to amend these three the laws and come into this particular, especially this IR, because it is the relationship and the resources had to be connected. So I feel it's a welcome move for that, for all the three uh, acts to be combined into Industrial Relations Bill 2019 or Industrial Relations Code 2020. Uh, we have Dr. Panda with us. Actually, so far as I know, he was involved in these making of these codes by the central labor authorities while he was deputy CLC at Kolkata. I think we would like to listen from him whether why these codes have not been implemented so far, and uh, will it be implemented in near future? Good afternoon, and very happy to be in the August audience in this chilled month of December. But the question is still chiller in the sense I'm not the government, I'm part of the government. I'm not here to say the volitions and desires of 30 states. This is in the pipeline for quite some time. Already four labor codes have been notified, enacted. Rules, 26 states have already framed rules, and some states have not framed rules. The government is awaiting the reactions of the four other states which have not framed the rules. At the same time, I'll just say, I'll supplement Samsudaji in the sense, why it is felt necessary. We all know that first Labour Commission way back 1969 had tried to attempt to formalize labor law. Then Second National Labour Commission in 1998, led by Burma sir, Ravindra Verma, the great veteran trade union leader, what he actually, we had interaction with him in Vishakhapatnam, what we actually spoke to him, what we wanted to know from him, and we shared also. My personal experience shows, because I worked in Central Sphere both for more than 30 years by this time, I found that there are a lot of confusions in the level of particularly that is more important to attempt to streamline them, and particularly to confusing definitions which has a conflict of rather overlapping jurisdictions between the state and central sphere. Before that, I like to take growth and trend of IR. One has to see when it was framed, the law. If you see First Factories Act 1881, then Employees Compensation Act 1923, 26 Trade Union Act, 36 PW Act, all these acts traveling from for last 100 years, mostly revolving around three sectors: mines, plantations, and to some extent manufacturing. So when we speak about Indian context, we have not seen much about service sector. Service sector has come, in fact, in last 3 decades.
But there have been attempt to streamline, to blend service sector into the mainframe of the labor laws. That is how, if you see the many labor laws in Payment Wages Act, in Minimum Wages Act, in Standing Order, in industrial disputes, you will find very interestingly that service sector is clearly missing. Then I'll come to the confusion part. We have appropriate government, different appropriate government for different level laws, and with the central sphere, somebody is appropriate government maybe under the Industrial Disputes Act, but same time the state government officer is. I'll not name one industry. There has have been some kind of conflict with the state government officer here in Odisha, out 4 5 days back. He wanted to have some information under the Trade Union Act regarding formation of a trade union. So the HR guy straight went and spoke, I think, in a very vehemently opposing, you have no jurisdiction at all. Why did you call me? What is your intention? So he wrote a very stinking letter today to the chairman and all that. Then the basic thing is that trade union, who is the authority? This is, of course, the state government is the authority. And how it is the authority, nobody knows. I don't have time for to elaborate them, because this has been a matter of discussion. How and why the state government is authority when the approved government is defined under trade union act, the approved having state and central sphere clearly spelled out. But why state? Why state? So, but any case, now state government is the appropriate government. Now this man wants to know the whether you have complied the 2002 amendment, and he wants to know when it is being registered, whether 10% of the workforce are really working in this industry and for one particular set which it claims. So the worker's name may be, the workman's name may be uh, fallacious, maybe manufactured, maybe concocted, and he wants to know from the employer. And it is duty of the employer to facilitate, that to give the genuine list of workers, so that there is no confusion that outsiders have been given a gate pass for giving the list of employees. When I conduct trade union elections, and incidentally, I can tell in 100 examples, in 800 trade union workmen industry, we have had the list of about 3,200 people fighting the contest. So these are the things. But very interestingly, when you ask me, this was a case in Odisha High Court, I think you must be all knowing. Somebody had questioned the very validity of code of discipline. It is only code. How you are going to enforce it? What is the sanctity? What is the legal sanctity of it? And my Paroy's comment was in ditto, echoed by the Honorable High Court of Odisha. You can see that Steel Employees Union versus this is not a secret, it is a reported judgment in LLJ. So what court said? Court said the FCI judgment in Supreme Court with regard to code of discipline is sacrosanct. But at the end of the sentence, it wrote, despite code of discipline given being cover of legal force by dint of Supreme Court's order, the end portion is more important. The government is directed or rather advised to frame suitable legislations. And if you first see the first part of IR code, it didn't have suitable legislations for bringing the recognition part. It was silent. Then in second part, they framed it. So that is how a part was missing. Then I'll go to ways. Very peculiarly in ways, out of 44 legislations, if we enforce 19, 12 legislations have got similar wage definitions, but 9, very interestingly, distinct and different wage definition. Somewhere HRA excluded, somewhere OTD excluded, somewhere the retention compensation is silent, somewhere bonus is inclusive, and one part is exclusive. So that is confusion too. Then very important part, industry. I asked, I think, in one class somewhere in a very top college, how many types of industry definition are there, rather, in the ID Act. Then everybody said the industry, and somebody said industrial establishment. Then I said, are you aware the industrial establishment is two types, 2KA and chapter 5 and 5B? Nobody knew. Nobody knew that it has industrial undertaking, the establishment, industrial establishment type 1, industrial establishment type 2, and industry. And then what is this? So that is why this is also very important part. Then comes your ways, very important. Again, I'll supplement it. How and why? The ways part had two different components, because many time the ways was
virtually split into two parts. One is basic, one is, of course, variable. So all these things wanted to lead to bring out the labor legislations and to streamline it. That is how Ranjan Saab is saying, thoda unko bolo pass on karne ke liye. So I'll pass on because 30 years experience cannot be said in 10 minutes. Thank you. Actually, we have participants, delegates from 8 subsidiaries of Coal India and Singareni. We have Mr. Manish Kumar, DP, NCL with us. We would like to know how these labor codes will affect our coal industry. Thanks, sir. Sir, I would take your permission to digress for 2 minutes at least. Sir, this is my first formal presence in front of PAN CIL. And I will like to thank my seniors for their blessings, my peers for their best wishes, and my colleagues who have helped me a lot to reach this position. Thank you. Thank you, everybody. And I feel very much thankful to my CCL colleagues. Thank you. Sir, first of all, I would like to say that there has been what sir has said in the morning, it has been a paradigm shift. And definitely it is going to affect our industries also. Number one, not much, sir, because we are implementing a lot of things. A strike, suppose we take a strike, 50% of the casual leave will come, that will affect us. Multiplicity of the union is one of the things, sir, which I will like to say. It will affect us. But I will like to inform the audience that when I went to NCL, I learned that we have got a code of conduct there, code of conduct for the unions. Sir was also there. You have to have 25% of the employees in the check-off system to be in that panel, to be in the IR system. I think it is a carry forward of NCL. Since it is a 25%, only 4 Indians will be there for the bargain position. You have to be there. You have to, in the check-off system, you have to ensure that you have at least 25%. And it is helping us a lot in what I have gathered in 2.5 months of my career in NCL. It is helping a lot. So this was the part, and though it has not been implemented everywhere, but I think that this multiplicity of the union will help in other subsidiaries also. We have to implement, take a cue from NCL. Let us see how we can do it. It's very easy to say, but it is very difficult to implement on the ground levels. Sir, one more thing, sir, I would like to say the women workers. In the Mines Act, since a night shift will come there, they will also be affected and they will also come to us. Sir, there are 2 or 3 or more provisions I've written, just I was going through it. The time limit for completing the disciplinary proceeding, it has been fixed to 90 days. That is a good thing. That is a good thing. And sir, it will also help us in disposing a lot of things. Though the contractor definition has been enlarged and broadened, but what I feel, since we are getting exemptions in a lot of things, it is not going to have much of the implications in it. Strikes, since public utility service, only that 50% will come to affect us. And sir, I think that this is a very august audience. Sir, there are 2 or 3 things which I will like to share with everybody and especially request DP sir. We need to ponder about it. There we have got a scope. What can we engage the fixed terms employment here? Because they are going to get all the benefits, or gratuity and everything. Gig workers, how can we take the gig workers to benefit our industries? These are 2 or 3 things what I just noted down while I was sitting there. I think these are the impacts, sir. Thank you. Actually, we are functioning with the concept of central trade unions. At present, we have 5 central trade unions, though Intec is not operating at our corporate office. Some of the subsidiaries, they are operating. But in the labor code, there is concept of negotiating union and negotiating council. That means once these codes are enacted, we will have to conduct elections to see their representation in our industry, and accordingly we have to form either if any union has got 50%, more than 50%, then it will be negotiating union, or we have to form negotiating council. But considering a huge number of registered trade union with us, because labor code hasn't detailed about central trade union, it has told that registered trade union. Suppose
we have hundreds of trade unions in our subsidiaries. How we will manage our wage agreements or central discussion like Apex JCC? This will be more problematic for us. What would you like to say about it? Sir, it is very much clear here. You have to be 20% workers have to be there. We are doing it, sir. Multiplicity of how much? 100 out of 5 trade unions will be only there. Now, problem is not that one, not the negotiation. Negotiation is one thing. IR code is not looking after the problems which we are facing at the ground levels. It is not the registered, regulated trade unions which are affecting us. It is the petty, it is not a good word, but the petty trade unions, localized trade unions which are affecting our day-to-day performance. Negotiation is one big part that is coming after 5 years. But day-to-day affairs are affected. We were in CCL, it was affected by JBM, it was affected by ASU. I and Sanjay, we used to work in Rajrappa. There were all the unions, registered trade unions were there, but only one union, unauthorized, whatever you can call, unrecognized, whatever, nobody used to talk to them. They used to rule the roost. In the Vashti, they used to come, they used to close down. Simple one statement, what sir has said, aaj band rahega, to band rahega. Apart from that, we have to also look up at it, but this has not been taken care of and we have to do what we are trying to do right now, sir. Mr. Samasundar, can you give some light on this aspect? How we will manage so many trade unions? See, I was holding a program for one of the very large cement industry. There was two trade unions which was registered and recognized, and another two were not registered and not recognized as well. As Ms. Manish was just mentioning, the unregistered union, which was not part of was actually ruling the roast. So in this IR code, when I was speaking to some of the major trade union leaders in Karnataka, and also I am part of the Karnataka Federation Chamber of Commerce Labor Law Committee as well. When I was just discussing with some of the employers, they said, let this bill come into the picture. Let this get enacted. And let us see what really the repercussions will be. In fact, I was speaking to one or two judges as well, who were earlier the labor law advocates, and now they have been elevated as judges. They said, first allow it to come, and then let us see what really happens with the union. But the current problem of whatever this multiplicity of unions are there and negotiating with them was there earlier, will be there also. But this threshold of this 51% of the majority, that will be considered only with not registered union is fine, but recognized union. The employer has to recognize that union as a negotiating body. So that is what the decision that came. So there's a difference between a registered union and a recognized union. So is the management recognizing that union? It is registered, fine. Is it recognizing? But So there is a thin line between the registered and the. But there is no such provision for recognition. But if we go through the bill, the bill is nearly about 1,800 pages. There's one or two lines mentioned in that. So I have gone through the bill. Panda would like to. Yeah. Here actually is a very interesting thing. The word is recognizing the negotiating union. The word one. Second, the negotiating union with singularity will have 51 or more percent. So if it is more than 51%, there is no problem for us. One industry, one union, things are fine, like is happening. But what I am apprehensive as a authority, what I see, when it is 51 for 50.9%. So I am thinking of that scenario, 50.9 scenario with 5 unions, say 20% each qualifying, 5 unions, 20, 20, 20, 20, 20. So I am now thinking 5 unions will have 5 representatives, one looking towards east, another looking towards the west, another looking towards Kanyakumari, another is Kashmir. So these are the scenario
which is definitely a challenging for the employer, because the ideology in negotiation is very important when you are having a collective people sitting for bargaining. In some industries happening, fine, because in port, 2 unions, in coal, 2 to 3 unions, in telecom, 2 to 3, fine. When it is 5, it is a challenge. Now, second part, what Chaudhary sir is telling, that small unions, particularly contract labor unions, now fighting a space in collective bargaining, giving charter demand for every Tom, Dick, Harry issues. They are trying to knock to our office to show their importance. What is the stature of these minority registered unions who are advancing the cause of contract labor? That is a bigger challenge than the recognized union or the unions meant for the regular workers. Thank you. Now I will invite questions from you delegates. My question is, okay, all central trade unions are opposing this implementing new labor code in but no central trade union is favoring for implementing this. और दूसरा क्वेश्चन है सर कि क्या ये नहीं लगता है कि आपको कि ये जो न्यू लेबर कोड ये मैनेजमेंट को थोड़ा ज्यादा अथॉरिटी या ये पावर दे रहा है कि आप अपने इन ओन वे यू रेगुलेट और ट्रेड यूनियंस. इफ आई एम परमिटेड, ऐसा नहीं है, ये अपना थॉट प्रोसेस का बात है. हो सकता है 60-40 हो, 50-50 कभी नहीं हो सकता है, पहले भी नहीं था. आप इसका अगर ठीक से देखेंगे, इसमें एक एम्प्लॉय रीस्किल फंड है, सोशल सिक्योरिटी फंड है. दीज आर द यूनिक थिंग्स. कैरियर सेंटर है एक्ट में. रीस्किल फंड, आप पहला बार एक सब प्रोविजन बनाए कि 15 डेज का वेजेस, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग एंड ऑल्स विल गो टू द अकाउंट ऑफ दैट पर्सन हु हैज बीन रिट्रेंच्ड. अर्लियर दैट वाज नॉट देयर. ऐसा नहीं है. प्लस आपको विमेन एम्प्लॉयमेंट का पहले नहीं था. आपको विक्स्ड वर्कर्स का जो टर्म्स का एम्प्लॉयमेंट है, दे आर गिविंग यू द ग्रेचुइटीज. देयर आर प्लस माइनसेस, वेरी ट्रू, बट इट इज नॉट दैट 0 is here, 100 is here. It may be 60-40. Trade union, let them oppose. That is no issue there. They always oppose the things. Any other question? Just to add it, it is a great way forward for us, for you Grish also. वर्कर का डेफिनेशन 12 है, 12 जगह. वेजेस का डेफिनेशन भी वही 6 है. At least they are bringing informity to you, for us, for our convenience. Simplicity is coming in it. It is a continuous process. It will also improve. One more plus point that has been included in this in IR code bill is that IR code is that fixed term employment. That may cause a big flutter tomorrow, but even for that, the definitions has been given, which is the fixed term employment, which are the jobs that has to be given, which is not the jobs, which is critical, non-critical. I think that will be a good one, but basically the employers are telling, let us welcome it and then see. And this is basically done for the growth of the business, especially the threshold of 300 and below doesn't get affected in whatever way regarding layoff, retrenchment, and termination. And even the definition of termination, retrenchment is also been very clear for those industries which are below 300. Supplement little here. The exact things which are going to affect, because the very concept is business enabling IR environment and implication new code. There are 2-3 things which are very important, vital. They have removed industrial establishment from purview of Payment Wages Act. So now it is become open to all trades. One, they have removed the wage ceiling. They have included employees, the managerial function. So what will be the role of the employer to handle the issues of the employees, which include the managerial functions?
how the industry is prepared to handle it. You have fixed term employment and you are given three important key riders for giving them same and similar benefits. And you have contract labor who will not be contract labor, those who are in the direct role of the employer. So how that clause will be used, who will not be contract labor? That will not be contract is a Basant Mahanadi Odisha High Court judgment. It's very important. What I am saying, your future industrial relations scenario will be contract labor based. There will be lesser regular workmen vying for more pie, rather contract labor trying to come. There, if you see very clearly, again, very interesting, very minor, finer point. How many of you had read core activity and non-core activities? In non-core activities, you may have read many things, but you have missed one thing. The key operation aspects have been in core activities like mining operation, like the core operation of blast furnace in steel industries. So where it will go when the contract labor or the regular workman ask for 2 lakhs rupees. So these are the areas when there is no scheduled employment. When there is no scheduled employment and central minimum wages is very high than the state minimum wages, almost 300% high. So how you are going to handle it when there is no scheduled employment? For everybody, you have to have the central minimum wages. That is how, these are the very interesting areas you have to work on it. Just Girish to carry forward that one supplement. ऐसा नहीं है कि employer propose नहीं करे. Employers are also opposing it on the part of wages. 50% से जो उधर होता था, आप तो दे पढ़े हैं, वो मान रहे हैं, they are asking for requesting the government for the concept of grandfathering. वो चाहते हैं कि पहले से जो चला आ रहा है, that is the concept, पहले से जो चला आ रहा है चलने दीजिए, न्यू से ये शुरू कीजिए आप. वो लोग वेजेस में 50% के बाद जो रिम्यूनरेशन ऐड करके करना है, that is creating a big headache for them, and it is a very big positive for the employees also, for the PF and all the terminal benefits. Any questions? Good evening, sir. Sir, I have two questions. One is, what are the drawbacks in implementation of IR code? And second one is, how to include a trade union in checkoff system when that union is not willing to deduct membership of its employees? If you go through the provisions of Payment of Wages Act, Yes. any reduction other than prescribed under law need the authorization of the concerned person so that it can be deducted upon. So as of now, the trade union subscription is not part of legal prescriptions where it can be automatically deducted upon. But yes, 99% trade union members, they give authorization for deduction. Only here, my problem, what I see, they give subscription to 2 persons and both the unions are claiming him to be a member. And that is the problem. So now if it is amended for inserting as a bona fide subscription, then from checkup can be also better method. It's not there in the law now, but yes, we have faced this scenario. Thank you. Sir, इसमें sir आपसे ही direct है. Sir, we are facing that problem. One of the central trade unions is not under checkoff system, and you can easily imagine what are the pitfalls for that one. Sir, वही Tushar was asking that the same thing, how to get off it. Checkup system, actually, to be very frank, are in practice, but I am not in favor. मुझे अगर आप पूछोगे, मैं फेवर में इसीलिए नहीं हूँ, because checkup system is not to say in open house, but sometimes they are forced to pay checkup, and some says तुम नहीं देखा तो evening को तुमको देखेंगे. So in fact, I have conducted trade union election. I faced lots of threats. So what I'm saying, allow him to cast the vote peacefully and say, oh, किसको प्यार करता है, किसको नहीं. And checkup
Sometimes management encourages because उसको पता होता है चेकअप होने से एक हो जाएगा. And that is how, like in Big Boss, that 12 players out of that 7 make a gang and they rule for 8 weeks out of the 13 weeks. That happens. So that is, you can convince them for checkup. That is not an, and part of make a settlement also. All bring all trade unions. Betha unko. Anything can be discussed and negotiated, and you can draw a minutes and say this is this. That can be a better way of handling the issue. In your company, you are deducting uh, subscription of only one union in NCL. So, what is the problem? You have a good system there. Sir, the issue is we are deducting, we are having check-off system as well as code of conduct, both. In check-off system, we are deducting membership of the employees for one union. There is a union which is not a part of check-off system, Coal India, and also in NCL. That has given affiliation to a craft union in NCL right now, and it is demanding for being a member of IR without going through checkoff. The issue is this, that the union is demanding recognition as under the code of conduct as a recognized IR union without going through checkoff. In NCL, C2 is not participating in checkoff system. Right. And recently, one ITI association has been affiliated with C2. Your question is that whether we can allow them in our IR system without deduction under checkoff system. Right, sir. Code of conduct is very clear that the membership will be decided through checkup system. If they insist on not having membership through checkup, how you can accommodate them in your IR system? It is not possible. Sir, the problem, sir, you are right, sir. The problem is how we verify their membership when they produce list of employees so that they can. There can be membership verification through your system, like when you display the list in the notice where two or more they subscribe to two or more unions. You call them personally. You take a certificate from them that they belong to this particular union. You can do that if you are keen on accommodating them in your IR system. In a very large cement manufacturing company, similar problem had happened. So what they did, they took a declaration from from the employees who are affiliated to 2-3 unions. Then finally, this was solved by taking as somebody was mentioning in the morning, Mr. Sharad. They took even a notary, this one, to which union they belong and things like that. So I went up to that level. So they have got a very fine system. They physically call that particular employee worker and get a confirmation from him in writing. That is a very good system. Actually, code of discipline basically was created for checkup system, but secret ballot came later on because of level of mistrust and more multiplicity of trade union. But checkup system, it is very fine. It will work very beautifully if person genuinely gives one checkup and one roster for one checkup, means one subscription for one employment number. If that is strictly implemented, we will not allow. Now that IT portal is developed, mapping and filtering is easy. With Aadhaar number checkup, if you make a subscription, it will not go for the second person and strictly you have to pay. So it will work really well. And of course, only thing he is afraid sometimes, once I give checkup authorizing X, then मेरा कहीं ना कहीं linking X का साथ पता चल जाता है. यही only problem है. Otherwise, present code of discipline checkup system में ठीक ठाक था. लेकिन अभी recent trend जो है, people are more mistrusting and encouraging for secret ballot. Thank you. Any more question? Withdraw, sir, please. Somebody.
Good afternoon. Good afternoon, sir. Sir, when there are, we have some dispute over protected workmen in our company. Can you throw, my question is to Mr. Panda, sir. Can you throw some light on protected workmen in the new labor code? Protected workmen, actually, to be very frank, are more protected than law itself has actually declared to be. Protected workmen always taken as a brahmastra for everything, anything to everything. But protected workmen, ultimately at the end of the day, who protects? Do I protect? You. It is the employer who is required to protect. For that, only the number is to be adjudicated by the cancellation officer. Okay. But at the end of the day, protection is required to be given, and you have to work out. And the most important part, what is protected is more important. And many times I have found that they think it is a blanket protection. That is where the employer sometimes fails to strictly deal with the issue lawfully when anything to everything, like I cannot be transferred, one, like you can issue memo to, like I cannot be charge sheeted, three, like so many things are there. Recently, actually, in one issue in Calcutta, somebody said, I am a protected workman, a management can issue charge sheet. So the matter was vehemently opposed by the employer that charge sheet is not an industrial dispute and protection is not there for him not to be charge sheeted. He said, no, as a tribunal general secretary, I need to be protected. So interestingly, what I did, I sent it to industrial tribunal questioning his issues so that industrial tribunal let it say. But I did not give any stay or interim direction. Thank you. For being a protected workman, it has to be declared. The list of protected Exactly, sir. workmen has to be declared. And I don't think in any of our subsidiary ever a list of protected workmen has been displayed. When there are a number of trade unions are running their business or their functioning of trades, how can they declare 1% of the total workforce or 1% of the union is the protected workman? So is there any new measures have been suggested in the new labor code? देर देखिए न्यू मेजर्स कुछ नहीं है. प्लीज रीड द सेंटेंस. अल्टरिंग कंडीशन ऑफ सर्विस, अल्टरिंग कंडीशन ऑफ सर्विस में एक है कनेक्टेड टू डिस्प्यूट, टू इज नॉट कनेक्टेड टू डिस्प्यूट. आप लोग फर्स्ट पहले पूछना है कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड में कौन आता है, देन प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड जो आता है, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है मना करो, ये प्रोटेक्टेड नहीं है. व्हाट आई एम सेइंग दैट इटसेल्फ बिकम्स ए कॉन्फ्लिक्ट, that itself becomes an industrial dispute. अगर उसको बोलना है, there is a clear cut mandate. I think what will be protected, what will is 47 में कभी भी कानून बनाया गया था. The purpose is not to victimize the workman, but not to कोई आकर, I know in one case उड़ीसा में एक ट्रेड यूनियन लीडर दूसरा ट्रेड यूनियन को मारा, बुरी तरह से मारा. Then he wanted to say that you cannot issue memo to me because I am protected. So this matter became a very big issue. So that is what I am saying. Management has to take a strong stand. This is a criminal action. This is a law and order problem. You have to connect his protection with the dispute. You have to connect his action, not privately. There is a judgment of Glaxo Laboratories. Everything and anything is not a contract of service. So something beyond the standing order happening in privately. आप गांव में जाकर चोरी करके आते हो, बोलते हो मैं protected workman हूं, हो नहीं सकता है. Most importantly, I forgot, or I wind up, most importantly, which I am telling everywhere, that industrial disputes are not now referred through the Ministry of Labor as per new law. How you are prepared? If I have given a private session of 1 hour, everybody will sweat. Why I am saying
Some very important questions are there which you need to address in-house. How you are going, because now we are filtering the issues. We are saying the appropriate government, but now it will go to tribunal directly. And when one bonus dispute advanced by, say, 5 unions against one contractor, and 5 disputes after the failure goes to tribunal, imagine the fate of the tribunal in a higher scenario. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, and just to supplement to Dr. Panda's this one, and even the number of tribunal members has also been increased from 1 to 2, number 1. Number 2 is that, see, the definition of protected workman is extremely very clear in the ID Act. And how the organization is implementing that in true spirit, because there is a difference between a protected workman according to the ID Act, civil or criminal cases. In fact, in one of the company, the protected workman, he called himself, they called, yeah, and he was, running some cheat fund. And he said, sir, what is there in the lunch hour I'm doing? So I'm a protected workman. So you have to be very, very clear the do's and don'ts of the protected, which is very, very clear. The definition is extremely clear. And how you interpret, see, even the law, interpretation of statutes. So similarly, how you interpret each and every word and line is extremely important. That depends upon the situation. Thank you. Read protected workmen along with the Trade Union Act. You see, there is a clear-cut mandate in Trade Union Act where civil suits will not rise against the trade union for undertaking a trade union activity in letter and spirit in a fair and transparent manner. Is there? You have to read sometimes link. Labor law is not about one labor law, it's about linking. Because I always say 40 section of ID Act are 40 different labor laws. You can write a book on each section. So that is how you have to link. Thank you. Rao sir. सिंगरेनी में इलेक्शंस 98 से चल रहा है साहब अभी सर थैंक यू सर है तो पहली बार 2 years के लिए इलेक्शन हुआ था बाद में ऑल यूनियंस आर एग्री फॉर 4 years 4 years tenure भी लेटेस्ट अपना टीबीजी के तेलंगाना यूनियन था पीरियड हो जाने से पहले कोर्ट लोग कंप्लेंट किया था सेंट्रल लेबर मिनिस्ट्री को 2 years इलेक्शन बोल के आ गया लेकिन ड्यू टू कोविड वी नॉट कंडक्टेड रिसेंटली वन यूनियन गॉन टू कोर्ट that is the period only 2 years. New labor code is telling 2, 3 or 5 years. Now the union CTU gone court whether we'll go for election for 2 years or 4 years or 5 years. Now minimum is the 3 years. New code, the system of the new code. This is a matter is under sub judice. There is no problem. Just to our speakers are there, experts are there. That's why I'm asking only advice. It is possible or not possible? But we have an example in Odisha where the 4 years period had been implemented from 2002. We have one Yes, sir. example in Odisha where in 2000 to 2014, we had one industry where 4 years term were followed in consensus with both unions agreeing. When 14, third union came, opposed that 4 years period. So when the Union A was enjoying the 4 years period, it vehemently contested that the 4 year agreement is illegal. And he said it is against the spirit of code of discipline. And Minister of Labor gave clarification that in absence of law being duly revised or code of discipline being revised, 2 years is valid. It is a chota example, sir. India is the basing on the majority of the law. 5 times we conducted elections. 2 is the 2 years, 3 is the 4 years. Out of 5, वैसे request करके union का all central trade unions also given 4 years. But meanwhile, one union gone for the labor department
यस सर, यस सर. अब अभी क्या है बोल दो साहब, सेंट्रल वन ऑफ द सेंट्रल ट्रेड यूनियन गॉन टू कोर्ट, they telling we go for election. We are management also ready, but it is the production period. We'll go after March, 1 minute. First of all, where it is subsidies? Which level? the High Court level. High Court. Why don't you file a miscellaneous petition? Sir, That there is one judgment clearly says democratic process of trade union rights cannot be scuttled. Could you make out? So you can go and file a miscellaneous petition that because of interim action, the trade union, rather trade union election cannot be stayed forever and kindly vacate it. okay, okay. It is under final decision, sir. Is pending may have it. Okay, thank you. I think so. Sorry, sir. I think so. There is also this one where a tribunal cannot be questioned. You know, the tribunal decision usually, even if it goes to Supreme Court, they refer back to the tribunal only. Hello. To conclude the session, we will just have to say that we will have to prepare ourselves for the future, and till the labor codes are implemented, we should at least study all the provisions in this, and let us wait. When it comes, we will see. Thank you. सर एक पार्टिंग मैं एक लाइन बोलना चाह रहा था खाली. अंडर द लीडरशिप ऑफ सर विनय रंजन सर, आप ज्वाइंट जो भी सीसीआई की जो फोरम है वर्ल्ड में आज तक इतनी बार्गेनिंग की प्रोसेस नहीं है इतनी बड़ी. जितना कम्प्लेक्स हमारी इंडस्ट्री है, वेगरीज है, यूनिकनेस है, ये कहीं नहीं है. तो वी शुड एज ए आईआर फ्रेटर्निटी फील प्राउड अबाउट इट. We are not the minuscule 800 people, 10,000 people, or 500 people's industry. Unique, boundaryless, and a lot of diversities in it. No straightforward, straitjacket solutions are there for the IR people. And we should feel proud that we are managing the situations very well. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so very much, sirs. I would now request Vinay Ranjan sir to please come up. We have a small memento for you all, sirs, a token of appreciation for your efforts that you have taken. Sir. First, sir, request Shama Sundar Saab. Sir, thank you so much for coming, sir. I will now request Tapan Kumar Panda, sir. Tapas Kumar Panda. Manish Kumar Saab. Ajay Chaudhary Saab. Thank you so very much, sir. DP sir.
नहीं वो मोमेंट इवनिंग में करेंगे सर हाँ अभी सर ठीक ठीक before we Hello, conclude hello. the evening, I would request Vinay Ranjan sir to please give his concluding remarks. We know that, sir, you would not be here. You have an important engagement tomorrow. I think there is an interview that you have to take, sir. Tomorrow you have to take an interview, sir, at Kolkata. So, sir would not be with us sir, tomorrow. So we'd like you to give your concluding remarks, sir. थैंक यू मेहरा साहब बट अभी ये भी सूचना देता हूं कि अभी भी कल का जो इंटरव्यू हमने रखा है 16-17 फॉर E7 to E8 वो अभी डामाडोल है, पोस्टपोन भी हो सकता है, तो आई मे हैव वेल स्टे, तो वो रात को बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टू स्पेंड टाइम विद यू गाइस, ऐसे इतने लोगों के साथ एक साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता है, बिकॉज यू गाइज आर रियली ऑन द फील्ड, आप फील्ड में काम करते हैं, तो वी गेट वाइब्स एंड इनपुट्स फ्रॉम यू कि क्या ठीक हो रहा है, क्या ठीक नहीं है, क्या पॉलिसीज हमें चेंज करनी है, कोल इंडिया एज ए कलेक्टिव विजडम कहाँ से हमें कहाँ लेके जाना है, क्योंकि मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूं कि HR इज अ बिजनेस, HR is a business and without HR no business can move, and HR is the centricity of everything. और उसके लिए अगर हम अपने आइवरी टावर में, हम अपने कैसल में रहेंगे तो वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो हमको अपनी महत्वता, अपना इंपॉर्टेंस खुद बनाना है। अगर हम किसी भी सिचुएशन में अपने हाथ नहीं खड़े करेंगे कि ओके वी आर देयर, वी विल हैंडल द सिचुएशन, वी विल ऑलवेज बी साइडलाइन एंड विल ऑलवेज बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, ये तो एक अपने फंक्शन, पर्सनल फंक्शन को एक प्राइड लेते हुए कि वी आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कोल इंडिया एंड वी आर द सेंट्रल ऑफ एवरीथिंग, और वो एक्शन से करना है, वो एक पार्ट हो गया। अभी हम लोगों ने पूरा दिन बिताया, 5-6 अच्छे सेशन हुए, राजेश वाज फैंटास्टिक, शरद गंगाल साहब वाज फैंटास्टिक, एंड अन्नपूर्णा दीदी तो मतलब क्या बोलूं, लोपामुद्रा ने तो बोल ही दिया कि जो एनर्जी पकड़ा उन्होंने, वो एनर्जी लेके बाकी लोग थोड़ा हो गए, उन्होंने इतना, लेट्स क्लैप फॉर हर, एंड यू विल हैव टुमारो आल्सो वेरी गुड सेशंस। Tomorrow भी हमारे पास Mr. Dutt will come. Mr. Dutt is also taken VRS from as a ALC. He's in West Bengal State Government Service में. You must be knowing West Bengal में. He's also very good speaker, very good knowledgeable. He takes session on IR code and being a good motivator. So tomorrow he will be here. Tomorrow Sama Sundar ji again has an individual session, a vast knowledge with him. So it will be great to learn. And और मुझे पक्का भरोसा है कि आप जब खाना खाने के बाद 2 बजे आएंगे ना, हाँ योगेश जी खड़े हो जाइए, पहले आप खड़े हो जाइए योगेश जी, ही इज आवर कॉर्पोरेट डिनर योगेश गुलेरिया जी। और एक तो आप हंस हंस के थक जाएंगे, हंस हंस के थक जाने के बाद वो पूरी सहजता के साथ में, पूरी संजीदगी के साथ में जो बातें वो अपनी बोलना चाहते हैं वो आपको सिखा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने फन करते करते कैसे लर्न कर लिया। एंड ही गिव्स हिज मैसेज ऑन ट्रस्ट, मैसेज ऑन लीडरशिप, मैसेज ऑन इंटरपर्सनल स्किल, मैसेज ऑन बैठ जाओ मैसेज ऑन कम्युनिकेशन वेरी इजीली। जो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कल कराएंगे 2 से 4 जो आपका सेशन है, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग कोई उसको मिस मत करना, एंड वॉट एवर एक्टिविटी ही डज प्लीज पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज। अभी ही कल मैं रायपुर में था, और जैसा कि पहला हमारा IR कॉन्क्लेव हो रहा है, वैसे ही पहली बार न्यूली इंडक्टेड डायरेक्टर्स के लिए मंथन प्रोग्राम एक क्रिएट किया गया, जिसमें कि हमने आर्मी के बहुत सीनियर रिटायर्ड ब्रिगेडियर भसीन को बुलाया, और उसमें भी हम ये चाहते थे कि जो हमारे डायरेक्टर्स बने हैं, बिकॉज दे आर द टॉप लीडरशिप ऑफ दिस कंपनी, दे शुड लीड बाय एग्जाम्पल। और उसमें भी हम फंडा नहीं चाहते थे, फंडामेंटल लेक्चर नहीं चाहते थे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग
ऑन लीडरशिप, कि वो किस तरीके से अपना बिहेवियर चेंज करे, बिकॉज पीपल लुक अप टू देम, दे आर काइंड ऑफ अ रोल मॉडल इन, हम एक जनरल मैनेजर से डायरेक्टर बनते हैं, उनका एक तो स्पैन ऑफ कंट्रोल, पावर, जो डेलीगेशन ऑफ पावर काफी बढ़ जाता है, बिकॉज वर्चुअली दे रन द कंपनी। तो वो कैसे बिहेव करे कि पीपल कैन लर्न फ्रॉम हिम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। उसमें उन्होंने एक डेयर दिया। क्या डेयर दिया? वेरी इंटरेस्टिंग डेयर। मनीष इज हियर, मनीष। उसने एक बार डेयर दिया कि, एंड दैट वाज बिटवीन, बहुत समय में हमें इथिक्स और डिलेमा, कि ये काम जरूरी है लेकिन इसके करने से मैं फंस सकता हूं, या ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, वो इथिक डिलेमा में बहुत टाइम रहते हैं। तो उस इथिक्स एंड वर्सेस डिलेमा को दूर करने के लिए उन्होंने बोला, जिस होटल में थे, बोला कि आप जाइए और आप सामने की सड़क, स्टेशन के पास मेन सड़क में आप जीव रगड़ के आइए, नाक रगड़ के आइए, जीव करने नाक रगड़ के आइए, एंड उसका फोटोग्राफ्स लाके दिखाइए हमें भीड़ बाजार में। दैट काइंड ऑफ अ डेयर, ये नेवर अनहर्ड ऑफ इन कोल इंडिया सिनेरियो, कि कोल इंडिया का डायरेक्टर को एक ऐसी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जा रहा है। आई एम श्योर योगेश ने भी ऐसा काम करवाया होगा, कि आप जाके बीच सड़क पे ट्रैफिक को रोक के आप नाक रगड़ रहे हैं अपने इसमें। एंड देयर वाज सो मेनी, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। तो कहने का मतलब है कोल इंडिया बदल रहा है, हमको भी बदलना पड़ेगा। देखिए, हमें 1 बिलियन टन 24-25 तक में जाना है, फिर डाइवर्सिफिकेशन भी करना है ना? डाइवर्सिफिकेशन भी करना है। कोल इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर लॉन्ग टाइम, 30 years, 40 years, and officers like what was your name, 2 officers there, आप लोग दोनों, आपके दोनों को बोल रहा हूँ। आप लोग का नाम बताइए, दोनों का नाम। हाँ, आप लोग का रिटायरमेंट 2040 के बाद ही होगा। हाँ, 40 के बाद किसका है? तो 44 तक तो कंपनी रहनी चाहिए ना। आपको पीछे भी लोग 44 वाले हैं। 40, हाँ, 44, 45 तो कंपनी रहनी चाहिए इन लोगों के भी रिटायरमेंट तक। जब ये लोग रिटायरमेंट हो, तो उसके लिए सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, कि हम डाइवर्सिफाई करें, कि हमारे जो रेवेन्यू है, जो भी कोल बेस्ड है, सोनली कोल बिजनेस बेस्ड है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, कंपनी चलते रहे कोल इंडिया, सो दैट न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स कैन सर्वाइव एंड टेक प्राइड ऑन इट। ठीक है ना? हाँ, बोलिए प्लीज। जी, सब्सिडियरी से रहते हैं, उनसे बात करती हूँ, अलग सब्सिडियरी का अलग अलग चीजें होता है। और सर मैं देखिए कि कोल इंडिया बहुत बड़ा कंपनी है, और इसका मतलब हिस्ट्री बहुत रिच है, और कंट्री के लिए बहुत कुछ करता है, और इकोनॉमी को भी बहुत मतलब कंट्री का इकोनॉमी को भी बहुत डेवलप करता है। लेकिन सर हम लोग के चीज में ये देखी में, एचआर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सर कंप्लायंस में ही रह गए। बिल्कुल। और सर हम लोग बस कंप्लायंस करते। मैं जो आपको चैलेंज कर रहा था, तो दैट वाज माय होल माई, आपने मेरी बात बोल दी। सर मैं देखिए एक चीज सर, हमारी कंपनी में जैसे कि सर हर कंपनी के एक होता है, इथोस होता है, एक ये होता है, हमारी कंपनी में सर कल्चर की थोड़ी कमी है, ठीक, जो मोटिवेटिंग कल्चर हम नहीं कर पाते। ओके, लेट मी एड्रेस इट, Thank you, sir. प्लीज बैठ जाइए। The culture is very big term. Culture is Rome is not built in a day. You'll agree. Rome is not built in a Rome takes decades and decades and centuries to build Rome. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी बहुत दिनों से बना है, और स्ट्रॉन्ग कल्चर कोल इंडिया का रहा है। कोल इंडिया का जो कल्चर, जो राव साहब ने एजिलिटी की बात की, एक तो है कि किसी भी ऑड सिचुएशन में वी आर देयर, एनर्जी सिक्योरिटी। कल्चर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, कि वो एक रिलेशनशिप रहा कि इट्स अ मोर वर्कर डोमिनेंट, एंड दैट टू उस जमाने में इलिटरेट थे, तो उनको दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ता था। बट सिचुएशन चेंज हो रहा है, वही मैं ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ, कि सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं, वो वर्कर कैटेगरी में हो, ऑफिसर कैटेगरी में है, दे हैव डिफरेंट नीड्स, देयर एक्सपेक्टेशन इज डिफरेंट, दे डोंट वांट अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब कल्चर की बात करते, तो एक एग्जांपल देता हूं, कि वाईफाई फॉर एग्जांपल,
मैं मजाक में लोगों को बोलता हूं कि जो हमारे नए मैनेजमेंट ट्रेनी आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, उनको 2 रोटी कम दे दो मगर वाईफाई जरूर दो, है ना। 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन वाईफाई के बिना जिंदा नहीं। दैट्स वे दे आर, यू नो, दे बीन बॉट उनके घर में। और उनको कुछ नहीं, खाने के लिए एक हाइजीनिक जगह आप दे दो, रोटी चावल जो बेस में बन रहा हो, बिस्तर ठीक हो, साफ चादर हो, साफ कुर्सी हो, उनको लग्जरी नहीं चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं वहां भी फेल हो जाते हैं, खासकर वैसी सब्सिडरीज में। एमसीएल एंड एनसीएल जो रिचर सब्सिडरीज है वहां तो इशू नहीं है। जो हमारे थोड़ा जो लॉस मेकिंग सब्सिडरी कभी रहे थे, अभी तो सब प्रॉफिटेबल में है। अब पात्रो साहब आपको बताएं कि Q2 में ऑल सब्सिडरीज आर इन प्रॉफिट। इवन ईसीएल विच वाज इन लॉस फॉर लास्ट ईयर, ईसीएल भी प्रॉफिट में आ गया। Q2 में सब सारे हमारे सब्सिडरी प्रॉफिट में, ईसीसीएल बीसीसीएल सब प्रॉफिट में थे। सीसीएल, दैट्स अ गुड थिंग, एवरीबॉडी इज इन ब्लैक, नो कंपनी वाज इन रेड। बट वो एक माइंडसेट का इश्यू आ जाता है कि जब हम आए थे 87 में, 85 में, 82 में कुछ नहीं था, तो हम कैसे दे दे भाई। अरे क्या बात है भाई, हाँ? होता है ना, जब हम आए थे तो नहीं होता, हम कैसे इनके लिए अच्छा काम कर दे भाई। वो जमाना अलग था, उस समय सिचुएशन फैसिलिटीज उतनी नहीं थी, अभी सब फैसिलिटी बन गई है। अभी आपका बच्चा कहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी जो 87 86 में सबके बच्चे नौकरी कर रहे हैं, मोस्टली दे आर ऑन द एज भी सबके बच्चे नौकरी कर रहे हैं। तो आपका बच्चा कहीं जाएगा और आपको बच्चे को अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो ट्रीट देम एज योर ओन चिल्ड्रन, दे हैव नीड्स। तो दिस इज ऑल माइंडसेट, यही एड्रेस करना, यही मैं चाहता हूं। आप 70-80 लोग में से हैं, इसमें अगर 40-50 लोग भी ये माइंडसेट लेके चले गए कि हमको इंप्रूव करना है और हमको ये देखना है कि दुनिया किधर जा रही है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, एचआर फील्ड में क्या हो रहा है, बस यही, दैट इज एनफ। 30-40% को अगर मैं थोड़ा कन्विंस कर पाऊं इस 2 दिनों में या 3 दिनों में, मैं माय जॉब इज डन। क्योंकि फॉर जर्नी ऑफ, सबसे पहले लोपा मुद्रा ने शायद बोला था सुबह में, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद द सिंगल फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप तो ले, 10 कदम तो चलें। आप लोग सब बोलिए 10 कदम तो हम लोग चलेंगे, 10 कदम 15 कदम चलिए। हाँ, वेरी गुड। तो यही चाहिए। सो इस तरह का कॉन्क्लेव करने का ये मकसद है। एक तो आपस में ही आप लोग इतने 70-80 लोग, हमको लगता है कि आप लोग अपने बैचमेट से काफी दिनों के बाद, 20 साल 25 साल के, तो जस्ट लीव द मोमेंट कि जब हम आए थे नौकरी करने, साथ में थे। एक बातों को ताजा कीजिए, शाम को आज अच्छा प्रोग्राम है, अनूप जलोटा का प्रोग्राम है, गजल सुनिए, एंजॉय कीजिए। तो दोनों चीजें हैं, एक तो लर्निंग फन एंड टेकिंग मेमोरीज अलोंग विथ यू फॉर टेक 2 days 3 days। कि हम जब एमसीएल गए थे, और एमसीएल को थैंक भी कीजिए, जावेद साहब हैं, राव साहब मीटिंग में है, उन लोग भी थैंक कीजिए कि लोगों ने उनकी पूरी टीम है, कि इनके लिए एक तालियां बजनी चाहिए। मुझे याद है जब हमारी वीसी हो रही थी तो होने में बोला कि जावेद साहब, अरे सर आप छोड़ दीजिए ना, हम देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। कोई भी जो यहाँ पे आएगा, और ये भी बोले कि हम सबको जो एयरपोर्ट में आ रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, हम सबको इंडिविजुअली रिसीव करेंगे। दैट इज द स्पिरिट ऑफ होस्टिंग। और हो सकता है कि अगली बार सीसीएल की बारी आए, अगली बार ईसीएल की बारी आए, तो सेम जज्बा सब सब्सिडरी को दिखाना पड़ेगा। सब सेम जज्बा, दूसरी भी सब्सिडरीज की बारी आएगी, हम अलग अलग थीम पे कॉन्क्लेव करने का एक रखा है। वो हमने अपने एनुअल वर्क प्लान, जो हम लोग एनुअल वर्क प्लान सबमिट करते हैं चेयरमैन ऑफिस में, चेयरमैन ऑफिस में, उसमें हम लोग करते हैं। तो एक एक करके, एक एक टेबल से मुझे एक एक चीज बताइए जो आपने सीखा आज। नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम खत्म करेंगे, है ना। नेक्स्ट 10 मिनट्स इज द लास्ट 10 मिनट्स में एक एक टेबल से बताइए। हाँ, कि माइक दे दीजिए, कि एक चीज बताइए कि व्हाट यू हैव लर्न ड्यूरिंग द डे, ओनली वन थिंग। एक ही सर, हाँ, आप और जो बोले भाषण नहीं देना, एक शब्द बोलना। एक ही सर। हाँ, हर एक इश्यू में आईआर डिपार्टमेंट, जो अपना पर्सनल डिपार्टमेंट साथ जाए। आप जो बोले हाथ उठा के आप हाँ, इन्वॉल्व हो जाइए, इन्वॉल्व हो जाइए, हर एक बिल्कुल। इश्यू में हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं सर। वेरी गुड, गुड गुड। उसके पीछे वाला टेबल, वन इश्यू एनीवन वुड लाइक टू ट्राई। सर, ट्रेडिंग
traditional learning and emotional learning. सेशन लर्निंग एंड इमोशनल लर्निंग. वाह वाह वाह. जब अभी कौन सा एरिया में हो, कहाँ हो तुम अभी? हैं? तुम उधर ट्रांस एमसीएल चलाया? हाँ सर, एफसीएल आपका रहते हुए आप इधर चलाइए. तो एमसीएल आ गया. वाह. मैं आ गया. वाह. मुझे तुमको तो ईसीएल जैसे हम याद कर रहे थे तुमको. वेरी गुड. ना अभी भी है सर सब. अच्छा, एमसीएल में आ गया तुम. अच्छा अच्छा. अभी सब ठीक है ना? ठीक है सर. हाँ ठीक है सर. शाम का कैसा गुजरता है? देखा जाए सर. ईसीएल वाले लोग समझ गए होंगे. शाम में ठीक रहता है. चलो, वेरी गुड. उसके पीछे वाला टेबल. हाँ मिश्रा बोलो. Communication is the हाँ, communication is a chain of all issues. कम्युनिकेशन इज द चेन ऑफ ऑल इश्यूज. कम्युनिकेट कम्युनिकेट कम्युनिकेट. ओके, पीछे उसके पीछे. हाँ, दो लोग भी बोलना चाहे तो दो लोग भी बोल सकते हैं. रितिका बोलो. सर टाइमली रिस्पॉन्सेज टू द एम्प्लॉइज नीड्स, एक ये है. और वेरी गुड. एनीवन वांट टू ट्राई उस टेबल पे? नहीं, ठीक है. इधर उसके बाद वाले टेबल पे. हाँ बताइए. अरे नोट्स देखने की जरूरत नहीं है क्या? तुम लोग नोट्स देख रहे हो. सर कौन से सब्सिडीज से हो तुम? सर एनसीएल से सर. एनसीएल से हो. वेरी गुड. ट्रस्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग आईआर. ट्रस्ट बिल्डिंग. हाँ, ये चीज एकदम गांठ बांध के रखो. ट्रस्ट जब तक क्रिएट नहीं होगा कुछ भी नहीं मूव होगा. ट्रस्ट. Sir, my name is Hemant Kumar Hena. I am from BCCL. Effective communication to resolve the issues. इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन. Yes. ठीक है. इस रो में आगे आ जाए. इस रो में आगे आ जाए. लास्ट बट वन. Sir, developing relationship. Working on relationship. Yes. Yeah, very important. Relationship. Yeah. Next table. Sir, timely response to problem may avoid bigger issues or critical. चलिए मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. केस स्टडी करें. हाँ, केस स्टडी करें और फिर आप लोग उसका जवाब दीजिए. लेट्स हैव. पंडा साहब थोड़ा बैठिए, आप सुनिए हमारा भी केस स्टडी. लेट्स डू केस स्टडी. आप यूनिट में पोस्टेड हैं. यूनिट में ऑफिसर हैं. आपके एरिया में 10 माइंस हैं. 10 माइंस में जनरली बहुत सारे एरिया में एक ही बड़ा माइंस है. जैसे एनसीएल एक एरिया में दो बड़े माइंस हैं. तो आपके यूनिट में एक वर्कर को चोट लग गई. ठीक है. और ऑन द स्पॉट जो अन्नपूर्णा जी ने बोला, ऑन द स्पॉट लोगों में गुस्सा आ गया और 50 लोग, आप ऑफिस में बैठे हैं तो 50 लोग का मॉब आ गया वो इंजर्ड को लेके आपके ऑफिस में. आप अकेले बैठे हैं. वो जीएम साहब के पास गया. जीएम वाला ने ना पीएम साहब के पास, पर्सनल मैनेजर साहब के पास भेज दो, वो डील करेंगे. आईआर मैटर है. ऐसे ही होता है ना. जीएम साहब के पास जाता है. जीएम साहब पीएम साहब के पास भेज दो. हाँ, पीएम साहब देख लेंगे. तो पर्सनल मैनेजर, आप अकेले बैठे हैं. 50 लोग आपके रूम में आ गए. आप क्या करेंगे? रियल लाइफ सिचुएशन बोल रहा हूं मैं. इस रियल घटना है ये, और ये रेगुलर घटना है. हाँ, आप बोलिए. वहां से बोलना चाहिए. 50 लोग आपके रूम में, आप क्या करेंगे? चलिए, वन गुड अप्रोच. अदर अप्रोच. हाँ बोलो. दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब मॉब मेंटेलिटी होती है तो उसमें स्पॉन्टेनियस लीडर बन जाते हैं. कोई आइडेंटिफाइड लीडर नहीं रहते हैं कि आइडेंटिफाइड लीडर है. उसमें स्पॉन्टेनियस लीडर बन जाते हैं. जो सबसे ज्यादा है रकम चलवे ना, हमको इंसाफ चाहिए, ये नहीं चाहिए, 10 लाख का मुआवजा दे दो, 2 लाख का मुआवजा दे दो, उसी को साइड में लेके आने का. आ जाओ भाई तुम साइड. सर ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ. इसलिए तो मैंने आपको रियल लाइफ सिचुएशन दिया. ये सर, और मॉब में महिलाएं ज्यादा थी, तो उनसे बात करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था. तो लेकिन
उसमें से आइडेंटिफाई किया कि दो लोग ऐसे हैं और मैं मॉब से निकल भी नहीं सकता, तो मैं उसको बस नजदीक बुला करके सिर्फ बोल, मतलब कान में बोल रहा कि भाई चलो आई गो ये चीज लिटिल था। वन स्टेप फर्दर, इसी केस स्टडी में मैं थोड़ा ऐड करता हूँ। वो मॉब बहुत गुस्से में आई और आपका एरिया ऑफिस में या यूनिट ऑफिस में घुस के 4 चेयर, 2 टेबल, 5 कंप्यूटर तोड़ दिए, इतने गुस्से में। आई एम एडिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। 5 कंप्यूटर तोड़ दिए, 4 चेयर तोड़ दिए, 3 टेबल तोड़ दिए। अभी इधर से कुछ बोल रहे थे कोई। हाँ, अब इतना कॉम्प्लेक्सिटी था, जिसको बताइए कैसे हैंडल करेंगे। सर अगर आप पर्सनल पीपल के लिए, जो एग्जीक्यूटिव्स के लिए, अगर वो लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो वो काफी यूजफुल होगा कि वो आपका लोकल लैंग्वेज में उसको समझाया जाए। और जिसको बोलते हैं ग्राउंड कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट। एक लैंग्वेज में वो एटलीस्ट ये समझेगा, अगर बीसीसीएल में है तो भोजपुरी में बोलिए, अगर वो ईसीएल में है बंगाली में बोलिए, एमसीएल में है उड़िया में बोलिए, अगर वो सीसीएल में है तो झारखंडी में बोलिए। हाँ, तो वो एक इनिशियल कंफर्ट लेवल आ जाता है। हाँ, चलो ये अपना आदमी है, ये करता है। सबसे पहले पंडा जी विल एग्री विथ मी, ऐसी चीजें कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाई जाती। दिस इज ऑल एक्सपीरियंस। और सबसे पहले सर, नो नथिंग इन टेक्स्ट बुक, कहीं टेक्स्ट बुक में ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। And this is perfect of IR man. और सबसे पहले सर, और उसके बाद फिर आपके पास जाता है डिस्प्यूट बन के। और हाँ। सबसे पहले तो सर बोलेंगे जाइए थोड़ा एक गिलास पानी पीजिए, ये भी एक तरीका सर। ठीक, चलिए। एनीबडी एल्स? क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, हमेशा होता ही है। हाँ, बोलो आलोक। सर एक कॉमन सेंस की बात है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा, उस स्पॉट पर जैसा है उस समय वो टूल अपनाना पड़ेगा। हाँ, इसका एक आंसर ये भी है कि देयर इज नो फुल प्रूफ स्ट्रेटजी विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल सिचुएशन टू सिचुएशन, एंड सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए और सिचुएशन की कौन लीड कर रहा है, कैसे कर रहा है, बट सम बेसिक फंडामेंटल्स आर देयर, प्रिंसिपल। जैसे कि एक उन्होंने बोला कि लीडर को आइडेंटिफाई करो, एक उन्होंने बोला कि पहले कंफर्ट दे दो कि भाई जो इंजर्ड हुआ है पहले मैं उसकी अरेंजमेंट करता हूँ, एम्बुलेंस बुलाता हूँ, उसको भेजता हूँ, तो एटलीस्ट कि भाई पर्सनल मैनेजर साहब इज शोइंग एम्पैथी। यहाँ आप एम्पैथी दिखाओगे, टेम्परेचर विल, हाँ, टेम्परेचर जो है उन लोगों का टेम्परेचर कम डाउन होगा। फिर 2 लोगों को आओ, 5 लोगों को, सबसे 50 लोग से बात नहीं कर सकते हो, तो देखो कौन 4-5 लोग एक्टिव है, 5 लोगों को अंदर अपने ऑफिस में लेके आओ, कि वो भी देखना है कि आपकी भी सेफ्टी देखना है। आप ऐसा कोई जोश में नहीं, भीड़ में घुस गए, आपको भी सेफ्टी देखना है। देयर इज इंसिडेंसेस वेयर यू आल्सो repented in an aggressive manner, and the mob can do anything. Mob mentality, you know. एक चीज और है सर, नहीं एक चीज और है सर, अगर आपका इमेज और कनेक्ट अच्छा है तो ऐसा सिचुएशन आने के चांसेस कम होगी। हाँ, पुण्यदीप बोलो। पत्रों सब भी और एक्सपीरियंस्ड है, हम लोग एक साथ थे इसीलिए एक्सपीरियंस्ड है। अच्छा। तो उसमें सर वर्कर्स लोग विल प्रोटेक्ट, वर्कर्स लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, एंड इफ द पर्सनल एग्जीक्यूटिव इज वेल ट्रस्टेड बाय द वर्कमैन, तो वो वर्कर्स लोग का सेफगार्ड मिल जाता है। और उस टाइम में अगर आप सिचुएशन हैंडल करने के लिए अगर पेशेंट लिसनिंग और थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई, दैट डिपेंड्स, वो कॉमन सेंस जो अप्लाई करना है वो करने से हो जाता है। नेक्स्ट 5 मिनट्स, अभी टाइम हमारे पास है, सो डोंट वरी, बहुत टाइम है, अभी हम शाम का भी है। नेक्स्ट सिचुएशन we have discussed. हाँ, Ritika, you want to say something? To just answer one of the approaches, we both were discussing here in our group. One of the solutions would be, like, many females are getting posted, so to inculcate the culture where the females are taking over as a reporting post. So normally it is seen that females are more sensitive. Knowledge is there, obviously it has to be. So if more females are there, it has been found as per research that the aggressiveness reduces by nature. So that is one of the options or approaches where more females can be made and at in terms of female there. When he's हाँ, एक माइक दीजिए पंडा साहब।
He is मेरा जो other part personal- of the government. Sub personal resolution की experience बात हो. Let's was hear from I him. have been dealing with IR in similar situation. We had a huge accident and 3 to 4 people died in West Bengal 1 year back. So flooded by a lot of telephone calls. मेरा जो personal experience है, backhand mind means the moment you join, first कुंडली सबको आपका पास रखो, first and fundamental. 1, 2, यूनियन में 2 टाइप लीडर होता है, एक फ्रंट एक बैक. फ्रंट लीडर इज ओनली फ्रंट, प्रेसिडेंट. बैक लीडर इज प्राइम मिनिस्टर. वो सामने आता नहीं है, वो पीछे से हवा देता है, अंडरग्राउंड रहता है. So you have to know every union has a back-end leader. उसको आपको आपका नेटवर्क से निकालना है. And every union has got कोई पंचायत का मुखिया का रिश्तेदार है, कोई एमएलए का है, कोई एमपी का है. And they have got own their networks and they are balancing. It's your job also to know. जब when these situations occur, पहले वो बैकएंड लीडर जो सामने आ रहा है, आपका जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, यहाँ इमीडिएटली एक्टिवेट करो. पंचायत मुखिया को पहले फोन करो. Before they come hound out you make your own work and you make a team. 2-3 लोग रहो. Try to engage them in conversation and calm down. पहले ट्रीटमेंट करो. उसको engage in conversation and try to calm him down. And उसका अगर आप पहले से अगर you are very good at keeping a network, वो पहले से मुंह में देखते हैं ना, आपका साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं, इसका थोड़ा देख लो. ये जो पहला सेंटेंस होता है, that has a very big U-turn. आपका साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है. तो इसमें रहता है पैसा. पैसा में again you make the homework. कितना हम देंगे, कितना कॉन्ट्रैक्टर देगा, कितना आप इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है. 3 पार्टी देते हैं. मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, रेगुलर वर्कमैन तो अलग होता है. तो इसमें कौन कितना पैसा देगा, आप इमीडिएटली बैकग्राउंड करके मेक ए होमवर्क. इधर से कितना दे सकता हो, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तो ये जो इन्वर्जन होता है, धीरे धीरे आप उसको ट्रीटमेंट कर लो. और हमारा जो बेस्ट पार्टीज हमको कम्युनिकेट कर दो, फिर ट्राई टू टेक आवर हेल्प. सर अगर आप उसका स्टेट लीडर को जानते हैं, बिकॉज हम लोग वी कीप इन कॉन्टैक्ट विद द स्टेट हेड, कंट्री जनरल सेक्रेटरी. अगर हमारा साथ रिश्ता है, सर काइंडली बोल दीजिए, कमार साहब को बोल दीजिए. तो दीज आर द थिंग्स. कोई जैसे विनय साहब बोला, कोई एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करता है. जैसे कलेक्टिव स्ट्रेटेजी दैट शुड वर्क. थैंक यू. सिमिलर केस स्टडी. गुस्से में जिस 5 लोगों को आपने बुलाया अंदर में, वो उसमें से एक बंदा, हाँ पंडा साहब, थैंक यू. यू आर कमिंग इन द इवनिंग ना? हाँ इवनिंग में प्लीज. इवनिंग ओके. गुस्से में उस 5 बंदों में से एक बंदा रिजॉर्ट टू मैन हैंडल, स्लैप्ड पर्सनल मैनेजर को झापड़ मार देता है. और वुमेन हैंडल और मैन हैंडल, जेंडर न्यूट्रल नहीं होना, जेंडर न्यूट्रल रहना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना. मैन हैंडल एंड वुमेन हैंडल, एक बंदा. एंड ही इज योर पंप ऑपरेटर, यूनिट का पंप ऑपरेटर है वो बंदा, आपके यहाँ काम कर रहा है. वो आपको स्लैप कर देता है, पर्सनल मैनेजर को, जो भी पर्सनल मैनेजर है. अब क्या करेंगे आप? हाँ? चार्जशीट करेंगे तब तो फिर वो इमीडिएट मैसेज देने के लिए क्या करेंगे? इमीडिएट सस्पेंड करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैसेज. इंक्वायरी पेंडिंग, सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी, तुरंत. नो नॉनसेंस, नो हैंकी पैंकी, नो इनडिसिप्लिन. मैं आप लोग सबको बोल रहा हूं, दिस इज कमिंग. इमीडिएटली सस्पेंशन and telling कि you cannot cross your boundary, you cannot manhandle, women handle employee. और उससे भी अगर ज्यादा है, FIR. If you want to give, strong signal, go and get FIR lodged and get him arrested. कि हम हमारे एम्प्लॉय के ऊपर में कोई भी इस तरह का इंडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करेंगे. That strong signal message
वो क्योंकि आगे के लिए भी होता है, एक बार आप बर्दाश्त कर लोगे, चुपचाप रह जाओगे, अगली बार फिर अरे यहाँ कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं करते हैं, गिव स्ट्रॉन्ग सिग्नल. See why I am going for real life situation, real life case studies, that we all strong young person. और मैं ये भी चाहूंगा कि जो यहाँ यंग हमारे एग्जीक्यूटिव और सीनियर लोग भी बैठे हैं, कैन वी डेवलप सच 3-4 केस स्टडीज ऑफ IR which can be taught in IICM? कौन केस स्टडीज बनाने में माहिर है कौन बनवाया है? उसको भेजिए ना हम IICM में, क्योंकि उसको हम अपने बच्चों को IR सिखाना चाहते हैं. और मैं आप है ना, वेरी गुड, तो उसको डेवलप करके भेजो भाई हम केस स्टडीज, है ना. तो हम चाहते हैं कि वी टीच देम नॉट थ्योरीज. अब कोई बच्चा IR ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है जहां उसको तुम IR पढ़ाने लोगों सो जाएगा, बैठ जाएंगे. लैंड एक्विजिशन भी बनाया, लैंड एक्विजिशन भी भेजिए, वो हम ISM में हम इनकॉर्पोरेट करेंगे. इनफैक्ट व्हाट आई वाज थिंकिंग टू रन अ कॉन्टेस्ट ऑन केस स्टडी डेवलपमेंट. इंटायर CIL में केस स्टडी डेवलपमेंट का कॉन्टेस्ट रन करेंगे, जिसमें कि लैंड एक्विजिशन हो, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो, हमारा ऑपरेशन रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, डिजिटाइजेशन रिलेटेड हो, IR रिलेटेड हो, HR रिलेटेड हो. हाँ एकदम, जैसे हैकाथलन होता है ना, हैकाथलन में लोग नया कोड और नया सॉल्यूशन करते हैं, तो केस स्टडी हैकाथलन, एंड दैट विल बी डेवलप्ड बाय आवर ओन एम्प्लॉइज. सो आप लोग पार्टिसिपेट, विल रन वेनाउंस फ्रॉम कोल इंडिया. चौधरी जी जस्ट वर्क ऑन दिस. रितिका कहाँ है? रितिका, तो ये इस पे कॉन्सेप्ट पर रितिका काम करो. विल रन अ केस स्टडी कॉन्टेस्ट, उसमें एरियाज भी आइडेंटिफाई कि इसमें आप करो, एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ ऑल द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन फ्यूचर. हम अब थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, थ्योरी सब बच्चे पढ़ के आते हैं. अब हम कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है और यूनियनिज्म क्या है, वो नहीं, हम केस स्टडी से उसको लर्न कराना चाहते हैं. क्योंकि आजकल भी जितने भी पेडागॉगी या करिकुलम MBAs के हैं, सब केस स्टडी बेस्ड है. जैसे मैं INSEAD में गया था तो हमको 15 दिन पहले ही केस भेज देते थे ऑन स्ट्रेटजी, ऑन मार्केटिंग, ऑन गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, फिर लो करियर वर्सेस लो फ्यूल वर्सेस, जैसे आपका कैंटास ने अपना खुद का एक लो करियर बजट एयरलाइंस किया, वो कैंटास का ही हिस्सेदारी खाने लगा. इस तरह की केस स्टडीज, फिर वाइन लॉन्चिंग, US में वाइन लॉन्च हुआ तो उन्होंने क्या गो टू मार्केट, क्या ब्रांडिंग स्ट्रेटजी बनाई. So those kind of case studies we will develop, and we all agree इसमें आप लोग participate कीजिए, केस स्टडी डेवलप कीजिए, जिसमें कि हाँ कुछ बोल रहे हो तुम. इसी के कंटेक्स्ट में सर हम चाहते हैं कि मैंने IR पर, जैसे आपकी लीडरशिप में IR कॉन्क्लेव हुआ, तो हमारा कोल इंडिया का जो IR सिनेरियो है टोटली डिफरेंट अदर सब मैंने फील्ड से. तो हम लोग एक फिल्म क्यों नहीं बनाए 15 मिनट का 10 मिनट का, जो कि पूरा IR का सिनेरियो जो से कोयला उद्योग का शुरू से अभी तक का है, तो ये उन लोगों के लिए एक लर्निंग भी होगा जो नेक्स्ट जनरेशन बैच. गुड आइडिया, गुड आइडिया, गुड आइडिया, वी नोटेड डाउन. चौधरी जी इसको नोट कीजिए. जैसे कि आजकल हम हर एक्सीडेंट का वीडियो एनालिसिस करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है. व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है तो विजुअल. अगर आप वर्ड्स पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, बट विजुअल जो इम्पैक्ट आप पे छोड़ता है ना, तो लेट्स क्रिएट अ विजुअल मीडियम, एंड वीडियो इज अ विजुअल मीडियम वेयर हम देख के ज्यादा, मतलब योगेश जी, विजुअल मीडियम इज द मोस्ट इम्पैक्टेड. सबसे ज्यादा रिटेंशन उसी विजुअल मीडियम में रहता है. प्रैक्टिकल सबसे ऊपर है, जो अपने हाथों से करते हैं. अच्छा, थ्रू वीडियोज ओनली, तो एक हाई इम्पैक्ट उस पर पड़ सकता है. चलिए, वी कंटिन्यू विद द लर्निंग. जो टेबल से शुरू करते हैं, जहां से छूटा था, यहाँ से. हाँ सर, हाँ प्रैक्टिकल बोलिए ना. पात्रो साहब के लिए वो तालियां तो बजा दीजिए भाई. नहीं, ठीक है. हाँ, पूरे दिन हमारे साथ रहे, वेरी सीनियर पर्सन, वेरी एक्सपीरियंशियल पर्सन, एंड ही हैज डन लॉट इन ECL व्हेन ही वाज अ डायरेक्टर पर्सनल इन ECL. या वैसे तो thousands of examples है, practical examples, but I will quote only 2. नंबर 1, जो विनय रंजन साहब ने कहा कि एक मॉब आया, और वो भट्टाचार्य जी एक्चुअली ही वाज राइट, वो हमारे साथ था. इट वाज इन बंकोला कोल एरिया ऑफ ECL एरिया, बंकोला कोल एरिया.
क्या हुआ कि 11 आदमी एक कोल बंकर के नीचे काम कर रहे थे, इंक्लूडिंग 7 female employees. Suddenly, that one particular member of that coal bunker was weak, fell down. 4 persons died on the spot. Immediately, it was not known how many were dead. People first thought all 11 have been smashed. Manager and agent, they were the head of the mine. Manager went to find out one crane, big crane, to take out the bodies. Agent, maybe for some other reasons, to inform DGMS and others, he went out of the spot. Bhattacharya and myself were there in the mine. I was going to the area office, and I have just come to my residence, which is about, say, 300, 400 meters away from the office, to take my scooter so that I go to area office. Suddenly, and I was passing through that area where that incident has happened. Suddenly I thought, people are rushing towards that spot. So I was coming down by walking. I noticed what actually has happened. There was a rail fatak. I asked that man, that gateman, and he told that some accident has taken place. Suddenly I moved back. I went to my office. Immediately what happened, there was none. And I could find that, yes, the incident happened there itself. I went to that incident site itself, then and there. At that point of time, no, it was not known to anybody. So what is the incident? I just collected some information. There was one supervisor. He told that, yes, Mr. Khan, she was the foreman in charge, and he was here supervising the job, and he himself was also inside. So भाई पहले तो पता करना होगा कि कितने लोग थे और क्या हुआ घटना. वो वहां से वो अटेंडेंस क्लर्क था, जो अटेंडेंस बनाया था, वो डर से भाग गया था वहां से. पहले उसको कांटेक्ट किया कि कौन था, वो फलाना था. उससे पहले पता किया कौन कौन था, बोला कि 11 आदमी सर थे. कितना हुआ, मुझे नहीं मालूम. अरे तब क्या किया कि कौन कौन था बताओ, नाम तुरंत नोट डाउन किया. तब पता चला कि भाई ये यहाँ रहता था, ये वहां रहता था, यहाँ रहता. तो 11 आदमी को मैंने पहले भेजा कि जाओ तो पहले देखो तो वो आदमी अपने घर पे है क्या, अपने जगह पे है क्या. Somehow or other, we collected the information that 4 were missing. They were not found. Rest 7 has been located. तो कम से कम एक चीज क्लियर हुआ कि जो 4 आदमी मिल नहीं रहे हैं, बाकी 7 तो सेफ है. तुरंत हम लोग वो चारों का बायोडाटा वगैरह जो सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, सर्विस रिकॉर्ड से निकाले. तब तक एक आउटसाइडर जो कभी कोलियरी में आता ही नहीं था, she was not at all a union representative, वो एक मॉब लीड करके लेके आया. फ्यूरियस मॉब को लेके आया. तो लेके आने के बाद वो जैसे आपने कहा कि डैमेज कर दिया, पूरा ऑफिस का ग्लास पैन्स, कंप्यूटर, चेयर, टेबल सब तोड़ ताड़ दिया, क्योंकि उसको कोई अटैचमेंट नहीं था कुलियर के साथ. अगर यूनियन लीडर होता तो हो सकता है नहीं करता था. तो इसके बाद क्या किया जाए, तो फिर बाय दैट टाइम भट्टाचार्य जी वाज टेकिंग द डिटेल्स फ्रॉम द सर्विस रिकॉर्ड क्लर्क ऑफ दोस 4 पर्संस. एक आउटसाइडर ने उसको असल्ट कर दिया, 2 थप्पड़ मार भी दिया. यस. तो मारने के बाद जब अरे ये क्या हो गया, तो कुछ वर्कर्स जो थे दे केम टू द सेट, बोले कर क्या रहो. वो जो कहा कि जो वर्कर सेव करते हैं वो सामने आए और कुछ ज्यादा होने नहीं दिया. इसके बाद फिर हम लोगों ने सारे यूनियंस को, जो जो वहीं ऑपरेटिंग यूनियंस थे, उनको टेलीफोन से उसको बुलाए ऑफिस में. उन लोगों को भी पता नहीं था, हो सकता है एक आध कोई जानता था, नहीं जानता था. आए, वी टोल्ड कि आपने कंट्रोल कीजिए अपना वर्कर को, और हमारा काम है कि पहले डिटेक्ट करें कि कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, उनका डिपेंडेंट्स कौन है, उनको कैसा नौकरी दिया जाए या और कोई बेनिफिट्स कैसे दिया जाए. सो दैट पेसिफाइड द सिचुएशन. वर्कर्स
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस आउटसाइडर को ऑफिस से निकाला। बोले इसमें आपका कोई काम नहीं है, आप क्यों आए हैं? अरे ये हमारा कंपनी का मामला है, हमारा कोलियरी का मामला है, हम लोग इसको देखेंगे, आप काइंडली ये सीन से हट जाइए। तो ग्रेजुअली जब उनको देखा कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो लोग चले गए। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है अपने वर्कर्स के साथ, दैट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट वी रिपोज कॉन्फिडेंस ऑन देम एंड दे ट्रस्ट अस। अगर वो रहे तो वो हमारे सामने आएंगे और वो सिचुएशन को हैंडल करेंगे। वो तो 2-3 दिन तक चला, फिर एसडीओ आए, जीएम साहब आए, बहुत कुछ हुआ। सब्सिक्वेंटली जो मॉब था उनके सामने से हम लोग मैनेजर और एजेंट को आने नहीं दिया, क्योंकि वो लोग आते तो डायरेक्टली बोले कि यही मारती है, तो उनको और फिजिकल असल्ट होता, उनको हटने दिए, मैंने सिचुएशन से हटा दिए। वी डेल्ट द सिचुएशन, दैट इज सिचुएशन नंबर 1। बिल्कुल हम लोगों के पास कोई आके तुरंत कोई असॉल्ट कर देगा या कोई गलत शब्द बोलेगा, ये संभव नहीं था, क्योंकि वो ट्रस्ट एक दिन का नहीं या एक साल का नहीं, इट इज ए That's कंटिन्यूअस a प्रोसेस। great learning. Thank you, पत्रो साहब। आपने रियल लाइफ सिचुएशन बताया और वो हैंडल किया। आई एम श्योर दिस इज अ लेसन फॉर ऑल यंग एंड एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव हु आर सिटिंग देयर, कि ऐसे सिचुएशन आपके करियर में ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ऐसे सिचुएशन आएंगे। हाउ यू विल बी प्रोफेशनली equipped enough to handle cool, calm and maturity is the word. लेट्स फिनिश, फिर हम लोग करते हैं, उन लोग का सुन लेते हैं। Sure. हाँ, एक लास्ट जल्दी 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 करें, फिर सब लोग भी बैठे, सुबह से बैठे हैं, so you can relax for some time before we meet for the evening dinner. हाँ, कौन सा टेबल से रह गया था? हाँ, वहां से शुरू कीजिए। हाँ, बताओ सर। इन अ नटशेल हम पढ़े कि रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल्स कैन क्रिएट ग्रेटनेस। वेरी गुड, ये सर इन नटशेल। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट टेबल। 2 वर्ड है सर, होप, ट्रस्ट, नीति, रीति। नीति रीति, हाँ, नीति रीति भी बहुत अच्छी वर्ड थी। हाँ सर, आई लर्न नीति रीति इज पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। हाँ, पॉलिसी क्या है और पॉलिसी हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, दैट इज नीति रीति। हाँ, बहुत लोगों को हिंदी नीति रीति में थोड़ा दिक्कत होगी, तो मैंने सोचा कि मैं ट्रांसलेट कर दूं। सर, आई लर्न टू ब्रिज द गैप, ट्रस्ट डेफिसिट with using emotional intelligence. Try to connect with our employees emotionally and try to understand them. पहले अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, इंक्लूडिंग वर्कर शिफ्ट वाइज, नहीं तो अपना पर्सनल हेड है तो ऑल यूनियन से अच्छा रिलेशन रहना, मैनेजमेंट से। और एक एम्प्लॉय का कुछ प्रॉब्लम हुआ अपन को मालूम पड़ता, वो अपन भी वो प्रॉब्लम करने जाके उसको हेल्प करना। ऐसा करने से कुछ भी प्रॉब्लम अपन का ऊपर आया तो भी एम्प्लॉयज विल अपना आदमी है बोले सर का, उन लोग ऐसा मानेगा। और हर एक सर्कुलर्स होगा, नहीं तो एनी न्यू आइटम्स होगा, थोड़ा पब्लिक एंड अपन पब्लिक में भिजाना पड़ेगा थ्रू यूनियन, थ्रू आर शिफ्ट टाइमिंग में, नहीं तो कोई फ्लड सर का ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन उसको भिजा दिए तो अपन के ऊपर बहुत भरोसा रहेगा। अपन गलती करे तो भाई अपना आदमी बोल के उन्होंने सोच के अपन को मदद करेगा। I will say great RC Singh, we lost him last week. हमारे बहुत करीब 50 सालों का और पात्रो साहब भी उनके साथ में काम किए, हम लोग भी काम किए। AITC के बहुत लेटर थे, राज्यसभा के मेंबर थे। और जब मैं आया तो मुझे पहला अरे ही वाज दैट टाइम
एडमिटेड इन एम्स। तबीयत खराब थी जब मैं अगस्त में आया आपके जाने के बाद, पात्रो साहब, तो उस समय वो एडमिट थे। वो 5-6 महीना के बाद आया, लेकिन 5-6 महीने में उनकी काफी कहानियां सुनी। जो भी बोलता था, अरे आरसी सिंह अभी नहीं है, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हर मीटिंग में वो मैनेजमेंट को सुनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं कोल इंडिया में गया तो ही वॉज अ पर्सन हु वॉज सबसे ज्यादा दुखी थे। अरे रंजन साहब, आपके साथ इतना अच्छा रिलेशन 3 सालों में डेवलप हो गया, आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं। एंड ही यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रांग लीडर। किसी को नहीं, आप ईसीएल वाले बताएंगे, जो ईसीएल वाले आप लोग उनके साथ में काम किए हैं, वो सबसे दुखी थे। और इतना प्यार हो गया उनके घर पे। वो he called me at his home, introduced me with his son, daughter-in-law. How I did achieve it? I only gave respect. I gave respect for his seniority. I gave respect for his knowledge. I gave respect for the work what he was doing for workers. इस उम्र में भी सबसे पहले पहुंच जाते थे। He was 78, 79. कोई भी इंसिडेंट हो, सबसे पहले he will rush to the occasion and he will play some part-time project management also. तो उस जो चीज जो बंदा कर रहा है उसके लिए तो उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो ये मेरा पर्सनल रिलेशन था। वी लॉस्ट हिम लास्ट वीक। अरे भाई, तुम लोग मेरे तरफ से एक तो मंजूर, जब उनकी श्रद्धांजलि सभा होगी तो मेरे तरफ से भी कुछ थोड़ा एक वक्तव्य दे देना। इतने क्लोजली हमसे काम किया, ठीक है ना? आप लोग गए थे, लेकिन मेरे तरफ से भी अभी शोक सभा वगैरह होगा तो उसमें जरा मेरे तरफ से भी वक्तव्य दिलवा देना। With this we come to the evening and 1 minute since IR call up तो 1 minute चलिए 1 minute का उनकी आरसी सिंह के। हाँ, somebody should keep timing। आप टाइम देखना, बोलना। राव साहब, thank you. With this, I hand over to Mera Sahab and Lopamudra for the evening announcements. Already, sir, आपने तो सारे announcements कर दिए हमारे behalf में. So the only further is, sir, चाय ready है ना? Tea is ready. आप सबको, I invite you to tea. We meet at the convention, Mayfair Convention, which is right across the road. Mayfair Convention at 7:30, first floor. Sir, sir, सर डीपी साहब, एक रिक्वेस्ट था सर। सर रिक्वेस्ट था सर, सब लोग यहाँ पर हैं सर, आप भी हैं सर, तो ग्रुप फोटो कंपनी वाइज हो जाए सर आपके साथ में। जी 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 हाँ हाँ, ये क्यूआर कोड यहाँ लगाया गया है, इसमें सारे फोटोज आज के हैं। आप लोग सर थोड़ा सा, आप लोग सर थोड़ा बीच में आ जाएंगे ना, आप लोग और इधर आइए प्लीज, थोड़ा इधर आइए। उसको बंद करिए ना सर, उसको बंद करिए। वो कंक्लेव को लगाओ। हाँ, लगा दे। हाँ सर आ जाइए सर मैम है, सर भी है, एक साथ सबका एक ग्रुप हो जाए। सर आइए सर, मैम आ जाइए।
सबको सब लोग आ जाइए जी। हाँ जी, अगले सब्सिडी, हाँ ये तैयार है, बीसीसीएल तैयार है सर जी। हाँ, मिलेगा ना। हाँ, बस हो गया। वो तो नहीं है। ठीक है, फिर वही 5.5 के आपका ना, आपका। निकेत, अब स्टेज संभालो। ये सर, दूसरा बाहर किया सर। ओके, यहाँ देखिए सर। सर आप इधर आ मांग रहे थे ये मैं सर एक बार याद रखिए, कैमरा को देखिए।